So what we have done, we have created these different shops inside that one ops shop. Sure. So that makes us easier to control, monitor, Right. and take the customer. Absolutely right. And I think it's important. और ये सब भी लेकिन आपकी टीम 1 या 2 दिन में पूरा निपटा लेती है पूरा प्रोसेस, राइट? बिकॉज मैंने देखा है कि आज लीड आई, शाम तक उसका एप्लीकेशन बन गया, कल उसके साथ नेगोशिएट होके परसों शायद डिसबर्स हो गया. A large set of customers wherein the customer lead to disbursal takes in the same day. Lendingkart was possibly one of the only institutions in the country which was putting their food where the mouth was, which meant that the entire underwriting was algorithmic. What that effectively means is these are data points that the customer has consented on, and these data points are helping us service him better, him or her. And I'll proudly say that I think no one understands the MSME banking as we do. Hello and namaskar. My name is Ram Deshpande. I am the host of a new podcast series called The Lendingkart Show. In this series, we will be speaking with our leaders from Lendingkart, the people who are driving innovation and disrupting the finance industry like no other, and doing it as one team. I also recommend you to listen to our earlier podcast series, which was hosted by our colleague Kinney, where she had interviewed all our leaders. Those podcasts are available on our YouTube and Spotify channels. We take that discussion forward and get into further details of Lendingkart and the Fintech industry overall. Now let's go and start the Lendingkart show. बिजनेस करना आसान है, said no man ever. मगर एक साल में 825 करोड़ का रेवेन्यू एट 120 करोड़ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 4000 करोड़ ऑफ डिसबर्सल, ये सब करने के बाद भी जो रुकने का नाम ना ले वो है हमारे बिजनेस लीडर्स. टू पॉज फॉर अ ब्रेथ, आई डोंट थिंक दे हैव इवन हर्ड दिस फ्रेज, leaving us in awe and wondering how on earth do they do it. Let's find it out from the movers and shakers of Lendingkart, our COO Abhishek and our CBO for core business Dipanshu. Welcome to the podcast, guys. Thank you, Ram. Happy Thanks, to be here. कैसे हो? सब ठीक? अभी तक सब ठीक है, but dreading the next few minutes. Why? You don't have to. काफी बदनाम हो गया तुम्हारा पॉडकास्ट. मेरा? क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? अभी पता चलेगा थोड़ी देर. क्या सुना? आई थिंक किसी ने तो आपको कुछ भड़काया है. सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना किया जाए, ऐसे ही अफवाहें फैलती हैं. No. Let's not do that. ठीक. Let's see. You have already done one podcast, I remember, with Kinney in the season 1. We read the audio. That's right. I think it will be good to still get a little bit about how you have progressed over the last few years at Lendingkart, because you've played a bunch of roles now, and Yeah. CEO is the latest role that you're playing. So it'll be very good to get in a nutshell how have things progressed for you at Lendingkart. So I think started with the chief analytics officer role, which was right up my alley. उस समय तो मतलब I'd just come off a large amount of analytics work that I'd done over the years. So that was a pretty easy role. I think the level of difficulty got a bit higher with the chief business officer role. But what happened was that, even in my previous roles, I was doing business for analytics. Right. So I still had a sense of things, how to run it and so on. I think now with the new chief operating officer role, there's credit, there's collections, there's co-lending, there's capital markets, a lot of it which is completely new to what I've done. So I think it's an exciting journey. It's the learning curve never stops in Lendingkart. Yeah. So I think it's exciting and looking forward to it. Awesome. And I don't think we could have had a better candidate than you for sure. Having worked with you very closely over the last year and a half or so. काफी अच्छा बोलते हो तुम, but नहीं सच है. I think one of the best things to happen for me at Lendingkart was to work very closely with Abhishek, and we sit like right behind each other in the sense in the Bengaluru office, and we can speak about any topic. I think that's the comfort level that I have gotten to share with Abhishek. No, I think that's critical, right? Yeah, absolutely. Being able to just have a normal chat instead of Correct. always being transactional. Absolutely. Right. राम थोड़ा लेट हो गया, appraisal हो चुके. Very true. I'm not disappointed with my appraisal. Just to let you Dipanshu know. was also telling you, मैं भी हूँ, मेरे से भी बात करें. Exactly. Now, I was going to come to him anyway because that's also the kind of rapport I share with Dipanshu. So Dipanshu, how have things been now? CBO, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, but nothing has changed from a day-to-day thing. What I was doing earlier, I'm doing the exact same thing. Right. But now, yes, the gun is now pointed towards me. But वो कहते हैं ना, role before the designation, responsibility before the designation. Yeah, kind of. Yeah. So जो मैं पहले कर रहा था वही कर रहा हूँ.
kind of. But yes, definitely responsibility has increased. Right. Right. I am the owner of all the things now. Right. And I know no one to blame to, no one to run to. Right. So it is me who is doing the entire thing. Right. Now, if you would like to talk about what are all those things that you are looking at or your responsibility areas? So currently, so technically, if I sum it up, what I do, I manage people, I manage or oversee processes, and I strategize whether it's to go to market or it is to strategize on the products, right? So that is what I do, and we have to then measure that. What is the growth rate? What is the efficiency which you have brought in the system? What is the ROA which the company is making and all that. So जितने भी हमारे यहाँ से लोन डिस्बर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस दीपांशु की टीम में होते हैं. पूरा ऑपरेशंस जो है हमारा यहाँ अहमदाबाद में वो पूरा दीपांशु को रिपोर्ट करता है. एंड एडिशनल टू दैट देयर आर पीपल ऑल ओवर द कंट्री हु आर आल्सो रिपोर्टिंग इनटू हिम. मैसिव रिस्पांसिबिलिटी है इनके नाजुक कंधों पे मेरे ख्याल से. So yeah, kind of. So I think as and when you take on these larger roles, a lot of responsibilities come, which I said earlier. So currently, when I say that people who are, so we have our physical network, we have our digital sourcing, then we have our call centers which are based out of Ahmedabad, few people in Bangalore and all that. So they have their roles and responsibilities well defined. They are spread across the country doing their respective jobs. So yeah. I think what we had also done is, as I was transitioning into the new role, we formally got into our new roles in April, right? Sure. But I think Dipanshu had already started playing the CBO role from about November or December onwards. I think same time. Mota moti, that's the timeline that we kind of decided ki, instead of making it an abrupt change, he'll ease into the process, and therefore most of it was already getting run by him when he took over the role. So it was fairly seamless. So it's very organic in the sense. The increase in responsibility wasn't like, okay, आज से तू ये करेगा. हाँ, वो कभी भी नहीं था. वैसे नहीं था. वो gradually, and I think इसने हथियाना शुरू कर दिया था वैसे ही पहले से. धीरे-धीरे पुरानी आदत है तो मैंने कहा अच्छा चल तू officially unofficially लेते जा. No, but see, these are all related things, right? So any which ways, when I was running the ops piece, so technically all the channels had to go through the ops process, right? So वो सारा चीज था, but yes, it was more organic kind of because I was foreseeing the ops and sales for maybe couple of channels and then the other channels came. उसके बारे में थोड़ा बात करेगा क्या? Because ops is the most crucial aspect of the loan journey, I would say. Because one side एक होता है कि कस्टमर आते हैं हमारे वेबसाइट पे आए या हमारे चैनल पार्टनर की वेबसाइट पे आए या किसी डीएसए ने उसको अप्रोच किया, बट एक बार वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तो उनकी सवालों के जवाब देना, उनका सारा जो भी करना है वो सारा कैसे हैंडल होता है? I think we have our teams in place. So we have the entire customer journey. We have created a proper chain of operations, right? So once a customer leads come in, there is a fixed set of people who will call to the customer. They will solicit the lead. They will bring in the documents. Then there is a separate file बनाते हैं वो लोग. Exactly. So they'll make physical, the file. right? Yeah, of course, digital file. So they'll process the case and then it will go to the second section of team, right? Which will do the acceptance of the loans. Negotiate. Exactly. So they'll do negotiate with the customers. They'll getting the documentation right, their KYCs and all that, and post that it will go to the agreement generation place. So where again there will be customer interaction, the agreement will be signed. Then it will go to a proper ops piece, which is doing the fund transfer and getting the final ENACH mandates and all that, and then the disbursal takes place. So what we have done, we have created these different shops inside that one ops shop. Sure. So that makes us easier to control, monitor, and take the customer through. Absolutely right. And I think it's important because there is certain amount of handholding that significant portion of customers do require. ऐसा नहीं है कि सारे ही customers के पास complete access है या complete understanding है हर चीज की. कुछ है जो हमारे जो बहुत faced with a new property, right? Whether it be an app, whether it be a website, they are unfamiliar. So therefore, they will need some bit of an assist from a human perspective, saying, "Sir, आप यहाँ पे हैं, you have to move to this page, or you have to be guided this way." So I think it's always an assisted journey. I think 100% self-serve is something that's starting to come in, but it still requires a little bit of a nudge. And even we have seen, a lot of our customers, they do a self-serve journey till a point of time, right? Once it comes to that final, that अब अगर मैंने accept किया तो पैसा account में आ जाएगा.
that is where they'll take a pause. Right. That is where they'll want to talk to a person, right? कि ये क्या हो रहा है, मेरे चार्जेस ऐसे क्यों हैं, पैसा कब तक अकाउंट में आ जाएगा, कितना आएगा, क्या रेट होगी, क्या EMI होगा. So that is the place, you know, where the customer would initially at least once for once talk to the customer service executive. करेक्ट. और ये सब भी लेकिन आपकी टीम 1 या 2 दिन में पूरा निपटा लेती है पूरा प्रोसेस, राइट? बिकॉज मैंने देखा है कि आज लीड आई, शाम तक उसका एप्लीकेशन बन गया, कल उसके साथ नेगोशिएट होके परसों शायद डिसबर्स हो भी जाए. We have seen a large set of customers wherein the customer lead to disbursal takes in the same day itself. Yes. Right. So towards the month end usually, or towards Correct. you know, just before a festival season, Right. kind of where we, you know, Right. where the customer also is very much interested to take the loan and he wants the money immediately in his account. So we, from a capacity point of view, we can, right from login to disbursal, we can do the same day. तो कोई इंटरेस्टिंग से कस्टमर वाले कोई स्टोरीज हैं जहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा हमें सुनने में कि भाई कस्टमर के साथ ये इन्होंने ये ऐसे बोला फिर ये हुआ, ऐसा कुछ है? Nothing as such which I can recall of. Okay. Customer, nothing as such. अच्छा, ठीक है, no worries. You remember anything? No, not really. Not of that. I remember one where there was this customer and he wanted to understand insurance Okay. because हम लोग क्रॉस सेल में इंश्योरेंस भी उनको कराते हैं, और एक लड़की ने उसको कॉल किया और हम लोग वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम क्वालिटी पर्पसेस के लिए कस्टमर कॉल रिकॉर्डिंग सीनियर लोग भी सुनते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो कस्टमर्स के वो हम सॉल्व कर पाए. उस वाली कॉल रिकॉर्डिंग में हमने देखा था कि शुरू में कस्टमर एकदम क्या होता है ये सब, ये थोड़ी है फालतू में आप लोग हमसे चार्ज करते हो वगैरह वगैरह, बट हमारी टीम मेंबर ने इतना प्यार से उसको समझाया, इतना शांति से कि नहीं सर आप प्लीज समझिए इसको ये, और वो एक 8-9 मिनट की शायद कॉल थी और उसके अंदर हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हो उसमें बड़ा काम है, एंड देन ही साइंड अप बेसिकली. मुझे वो मैं कभी नहीं, आई थिंक आई स्टिल हैव दैट रिकॉर्डिंग इन माय लैपटॉप एंड इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अ सर्विस माइंडसेट. Oh, absolutely. है Absolutely. ना? So customers, and so many things, right? On the customer service side, especially. from you know, this is something which is quite usual in a day-to-day interaction with the customers, right? So whenever you are, so the first thing is that customer would want to check on that क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हो सकती है, क्या कुछ चार्जेस कम हो सकता है, राइट? बट व्हेन इट्स वी यू नो गो ahead and explain the customer that why this is the interest rate which is being charged to you, right? Because we don't charge exactly the same interest rate to each customer, or whether it's an insurance charge or whether it's an financial health report or a card protection plan. So customers, they do get worried कि ये क्या हो रहा है, तुम पैसे का करोगे क्या? And then once we explain them कि नहीं नहीं ये this is something which will definitely benefit you and it's 100% optional whether you want to take it or not, then the customers do opt for it. In fact, there was one customer who had put in an RBI complaint. Oh. And Sudeep at that time and me, we spoke to the customer, we kind of convinced him on multiple options. I think I must have spoken to that customer at least 50 times. 50 in the next 1 month. Wow. And he finally withdrew the complaint. And he came back with a personal message saying, thank you so much. I appreciate that, you know, somebody senior is actually taking interest in an individual case. And how much would be the loan amount for that person? The loan amount was about 4 or 5 lakhs. That's it. But still, the 2 CX See, it's important that, you know, the relationship should not get soured. Correct. That is very critical, right? Because, I mean, at the end of the day, you have aligned in the journey with a customer at a point where there was a need. Now that need should still keep the relationship balanced. Right. And therefore, you know, he had my personal number. He kept calling me, messaging me, and at the end of it, we were able to resolve it, right? And he was quite appreciative of that. So I think that's the service mindset that we anyway need to work with. And I think all the seniors are anyway involved in some of these calls, right? So that's one example that I could think वो of. कहते हैं ना, customer is the king. Absolutely. Basically, right? Yes, it is. So, अगर हमें कस्टमर्स को बताना है, बहुत सारे कस्टमर्स जब बोलते हैं, चाहे वो आप कह लो कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या कहीं और से कुछ उनको एक गलत एक्सपीरियंस हुआ हो, दे आर नॉट नेसेसरली एब्सोल्युटली श्योर ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज, कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या क्या टाइप के आंसर्स उन्हें करने हैं या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उन्होंने. Right. व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू वुड वांट टू टेल द कस्टमर? Yeah, why not? So MSMEs typically, you know, whether take it loan from Lendingkart or any other organized channel, right? I think 3 or 4 things which they should definitely keep in mind is that one, that you know, the central government has brought in the Udyam
certificate as one of the Yeah. primary business registration proofs, right? So BRP is what we call them in our BRP, lingo. yes. So Udyam registration certificate is one of the BRPs, I think, which is a self-declaration mode kind of a document, which the customers they have to go and make it, right? जिसको This is- उद्यम आधार भी कहते हैं. जिसको उद्यम आधार कहते हैं. सो उद्यम आधार हर कस्टमर को बनवाना चाहिए डेफिनेटली. वो लोन लेने के लिए भी काम आएगा और किसी हर गवर्नमेंट सुविधा लेने के लिए काम आएगा. और इसमें कुछ लिमिट होती है कि आपका रेवेन्यू इतना होना चाहिए, इतने बड़े नहीं, कोई MSME? लिमिट नहीं है. हर बंदा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाँ. राइट, जो अपना खुद का व्यवसाय चलाता है, हाँ. वो उद्यम आधार ले सकता है, राइट. एंड दिस इज सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि उसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और अपने आप को डिक्लेरेशन देना है कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड उद्योगपति हूँ. दैट्स इट, राइट. उनको अपना आधार नंबर देना है, पैन नंबर देना है, बाकी पीछे सारा डेटाबेस जुड़ा हुआ है. ओके. एंड 2 घंटे के अंदर उसको उद्यम सर्टिफिकेट मिल जाता है. ब्रिलियंट. That is one thing which customers definitely should have, right? Second is that now after the digital lending guidelines and RBI has been pushing कि MSMEs को कैसे लेकर आएं क्रेडिट परव्यू के अंदर. सो 2-3 चीज़ें हैं जो उन्हें और ध्यान रखनी है, जैसे कि पैन और आधार कार्ड का लिंकेज, राइट. उसकी ड्यू डेट जा चुकी है, बट अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी अराउंड 7 से 8% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका पैन और आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है. और अभी उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी फ़ी भी है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है. आई थिंक आफ्टर 90 डेज और सो वो फ़ी भी बढ़ जाएगी, राइट. सो अभी भी जो 7% कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे फनल में, दे डोंट हैव दैट लिंकेज. सो जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड का लिंकेज करवाना चाहिए, राइट. तीसरी चीज़ है कि जितना भी ट्रांजैक्शन वो अपने बैंक के खाते के थ्रू करेंगे, तो जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे शॉप ओनर्स हैं, जो अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना वो UPI के थ्रू या बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आएंगे, उतना उनको क्रेडिट के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी. क्योंकि आपका जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे उसके बेसिस के ऊपर कोई भी लेंडर या कोई भी बैंक आपकी इनकम को मेजर नहीं कर पाएगा. आपका बिजनेस का रेवेन्यू नहीं बनेगा, रेवेन्यू नहीं बना पाएगा. तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट की. तो अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस बैंक में नहीं दिखेंगे तो उसका एक फ़र्क पड़ेगा उसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर. सो आपके ट्रांजैक्शंस बैंक में होने चाहिए. दीज आर दी टॉप 3 थिंग्स. बट तीसरे पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है कि ये मैंने सुना भी है कुछ लोगों से कि अगर मैं ज़्यादा बैंक ट्रांजैक्शन दिखाऊं तो मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा. ऐसा डर होता है लोगों के दिमाग में, इसलिए वो ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं. हाँ, शायद दिस इज़ वन थिंग जो कि इनको हैम्पर करता है कि पैसा कैश में लें और इसमें नहीं लें. बट आई थिंक जैसा गवर्नमेंट पुश कर रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हों, राइट. सो आई एम श्योर कि वो दूर नहीं है. आई थिंक कि दे विल नॉट बी, वो डर निकाल देना चाहिए मुझसे, क्योंकि कभी ना कभी तो टैक्स के बकेट में आना ही पड़ेगा उनको, राइट. बट आई थिंक कि अगर लोन लेंगे तो अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे. करेक्ट, राइट. हाँ. हमने I think एक चौथी चीज और which is on the bureau side of it. राइट. I think while there is a lot of awareness now कि क्रेडिट ब्यूरो में आपका स्कोर ठीक होना चाहिए. क्रेडिट ब्यूरो मतलब सिबिल वगैरह. सिबिल, इक्विफैक्स, काफ़ी सारे 4 ब्यूरो हैं अपनी कंट्री में. सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है और क्रिफ है. सिबिल सबका यूसेज सबसे ज़्यादा है. आई थिंक वहाँ पे गिवन दैट ऑल द लेंडर्स आर नाउ कनेक्टेड एट द ब्यूरो लेवल. आपका कोई कार्ड है, आपका कोई और छोटा लोन है, कोई बड़ा लोन है, सबकी EMI टाइम से पे करें. अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं आफ्टर द ड्यू डेट तो वो रिकॉर्ड हो जाती है. उससे आपका स्कोर कमज़ोर पड़ता है. सो आई थिंक दोज फीचर्स वेयर यू नो कि अब मेरी एक लेंडिंग रिलेशनशिप या मेरी एक रिलेशनशिप है फाइनेंशियल सर्विसेज से, उसको अच्छे से रीपेमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक दोज 4 इफ यू काइंड ऑफ ब्यूरो कंप्लायंस हो गया, GST कंप्लायंस हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा करनी चाहिए. बट हमारे यहाँ लोन लेने के लिए GST होना अनिवार्य नहीं है. हम बिना GST के भी लोन देते हैं, बट उद्यम आधार लगेगा और साथ में कोई एक और जो BRP था, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, वो एक लगेगा जो शॉप एक्ट लाइसेंस हो सकता है या कोई और तरह का. So 4 things: उद्यम आधार, पैन कार्ड आधार लिंकेज, your digital payments and CIBIL score. Because of repayment of loans on time. These are the 4 things जो आपको. 4 major things. 4 major things. अगर ये 4 चीज़ें हैं तो चाहे वो लेंडिंग कार्ट हो या कोई और बैंक हो, आपका लोन सुनिश्चित है. कम से कम एक फेयर वैल्यू मिलेगी. करेक्ट. आपको जितने की जरूरत होगी कम से कम उतना मिलेगा. करेक्ट. तो रिजेक्शन आपका शायद ना हो, कम होगा, नहीं होगा. कम होगा, अगर होगा तो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रीजन मिलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है. राइट. गुड. दिस इज फिनोमिनल. आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें बात करनी चाहिए और लोगों के तक
जितना ज़्यादा मार्केटिंग की तरफ से तो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल. Now- यही आशा है आपसे. अगर मैं let's take a different track a little bit now. Now we've seen a profitable year last year, Right. 120 crores of FY23. Yeah. Now it's a general sense that you sacrifice profitability for growth, especially in startups. Like when you're Right. chasing growth, you sort of keep profitability on the back burner. A lot Right. of startups have gone through that sort of. Or now the thing is changing. But Lendingkart, we've always had profitability focus. Yeah. How are you looking at the next year and the year after that? So, I mean, in terms of the journey going forward, where profitability and growth go hand in hand. So to my mind, Ram, the one doesn't exist without the other. Right. If you have an unbalanced growth where you're just looking after कि मुझे अपना balances बढ़ाना है, मुझे और लोन बेचने हैं, but मुझे profitability की कोई कद्र नहीं है. At the end of the day, you know, losses आएंगे, investor का confidence नीचे जाएगा, you will not end up growing to the extent that you can. Right. So to my mind, it's a balanced equation. जितना आपको focus growth पे करना है, उतना ही profitability पे करना है. And I think once you get that balance right, what ends up happening is it becomes a virtuous cycle. कि profitability growth create करती है, growth वापस profitability create करती है. Right. And I think we have done a swell job in that in the last about 1.5-2 years, where our disbursements have gone up by about 50% on a year-on-year basis. And I think our profitability has obviously now come up to about 120 crores. Wow. To my mind, we should look at doubling the profitability this year with about a 50-60% growth in the AUM or the business itself. And I see that growth continuing because there is so much headroom available. आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो हम लोग कितना करेंगे 6,500-7 हज़ार करोड़ का धंधा, right? We will fulfill about 1% of the MSME needs in the current year. Yeah. Right? So even if we get 100 lending cards, that's when we will be able to have 100%, A significant a dent in the significant universe. amount of Yeah. MSMEs will get covered for their needs, correct, right? Correct. तो अभी headroom इतना ज़्यादा है कि you don't have to sacrifice on either profitability or growth. You can continue to create a really good value business and which can add a significant amount of credit access to the underserved. Correct. क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखो तो अपन जिस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उसमें बैंक्स ज़्यादा नहीं खेलती, राइट? And that is why our nearest competitor may be about 1/5 our book size, right? So I think the potential for growth is huge, and the potential for making a profitable growth is also huge. So we should just continue to Would you focus on say that our real competition is the unorganized sector, the neighborhood money lender? Is that the thing I think we that- had obviously started there, Right. but over a period of time, what's also happened is that we are playing in the higher CIBIL score bands. We are playing in the better credit segments. But what ends up happening is इन लोगों का या तो बिजनेस का विंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है या इनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं होती है. तो most of the larger institutions like banks and NBFCs don't really know how to assess their credit worthiness. And I think that's the white space that we are playing in. I think we have moved a little away from the money lenders ka competition. Sure. I think the interest rates have been coming down over a period of time. What we are now really working on is we work a lot with co-lenders, right? PSUs le lo. Right. PSUs have trust. They have lower interest rates at their available. PSUs, you mean public sector Public banks, which sector is banks, like PNB. PNB ले लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लीजिए, ये वाली जो बैंक्स हैं, इनका एक तो लोग उन पर ट्रस्ट बहुत करते हैं. दूसरा, इनके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लोअर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट गारंटीज होती हैं, काफ़ी कुछ होता है. इन लोगों के साथ जब हम लोग हाथ मिलाते हैं एंड वी से कि आप लोगों का मुझे बैलेंस शीट दे दीजिए, मुझे आपकी लोअर इंटरेस्ट रेट दीजिए एंड मैं इसमें एक्सेस करूँगा थ्रू ईज ऑफ एक्सेस, माई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ एंड माई स्पीड. तीन चीज़ें जब हमारी तरफ से मिलती हैं और तीन चीज़ें उस तरफ से मिलती हैं, तो what ends up happening is that it becomes a collaboration which works very well for us, for the bank as well as for the customer. Right. And I think that really will fuel the growth in the next few years. Right. Co-lending is the way to go. We now have 20 co-lenders on our books, and I think we'll continue to grow with them. Yeah. And I think ये भी है ना कि अगर अगर मैं एक MSME को लोन चाहिए, मैं 20-25 जगह जाके फॉर्म भरूँ से अच्छा मैं एक जगह आके भर दूँ. Absolutely. है ना. एंड देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दीपांशु की टीम करती है ऑन अ डे टू डे बेसिस, कस्टमर के लिए सबसे अच्छी डील कौन सी है वो निकाल के उनके लिए बना के दें. So that helps us because क्योंकि
that helps us in serving the entire segment of the customers. So probably कुछ customers होंगे, they would want interest rates as low as say 14.5%, right, which is right into the PSU bracket, and to the customers to the higher end of the bracket as well. So this helps us to serve the entire segment of the customers. Correct. और ये सब चीज़ों में हमें ये सुनने में बहुत आता है कि भाई हमारे पास कस्टमर का डेटा है, डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, बिल्कुल, और फिर जल्दी से करेंगे वगैरह वगैरह. ये सब क्या मिथ्या है? मिथ्या नहीं है. So interestingly, I think, and that's one of the reasons what pulled me to Lendingkart at that time, right? I was an analytics guy. I could understand data. Lendingkart was possibly one of the only institutions in the country which was putting their food where the mouth was, which meant that the entire underwriting was algorithmic. What that effectively means is कि आपने कस्टमर से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट लिया, आपने कस्टमर से उसकी ब्यूरो रिपोर्ट ली, मोटा मोटी मिला के कुछ 350-400 वेरिएबल्स आपके पास आए, उन पे जो अपन इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट 5,000 to 7,000 वेरिएबल्स फॉर एवरी कस्टमर. What that translates to in the 10 years of our existence is 5 billion data points. Wow. मतलब 5 के आगे 9 जीरो है. Let's be clear about this. Yes. So I think the amount of data that we are sitting on, and the better part of it is it's non-intrusive. ऐसा नहीं है कि किसी ऐप में जाके उसका ट्रांजैक्शनल डेटा उठा लिया, कस्टमर को पता नहीं है. सारा उसके कंसेंट से ही हो रहा है. Absolutely, these are data points that the customer has consented on, and these data points are helping us service him better, him or her, right? Whether it be with respect to giving the loan, or whether it be servicing him later, him or her later, right? And I think that is the power of analytics, data that we have managed to create. Because algorithm से हम underwriting कर रहे हैं, right? And right throughout my career, I have been working into SME space. So हमारा underwriting का जो time है, underwriting का, यानी कि customer को yes या no बोलने के लिए, that is 30 seconds, right? पहले ये इंडस्ट्री चलती थी जब कस्टमर को अपने 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी पड़ती थी, राइट? एंड फिर अपना 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता था. फिर जीएसटी आया तो पूरे जीएसटी के रिटर्न्स देने पड़ते थे, या इनकम टैक्स के रिटर्न्स देने पड़ते थे, राइट? नाउ दिस एंटायर थिंग हैज मूव्ड इनटू वन बैंक स्टेटमेंट, राइट? एंड आई विल प्राउडली से दैट आई थिंक नो वन अंडरस्टैंड्स द एमएसएमई बैंकिंग एज वी डू. No other lender, I think, will have that deep understanding. We might be different in sizes, but yes, our understanding is the best. और उस टाइम पे तो ये भी होता था ना कि लोग जाएंगे, दुकान देखेंगे, फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे, हाँ, गल्ले पे इनफैक्ट some of them used to go through the गल्ला का नोट्स, कि इसका कितना लेजर पे क्या आ रहा है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, the entire इनकम इम्प्यूटेशन पूरा used to be actually इन्वेस्टिगेशन होता था, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता था, स्टॉक्स चेक होते थे, उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट्स होती थी, ऑडिटर्स के थ्रू आपको अपना बैलेंस शीट ऑडिट करवा के देना पड़ेगा, राइट? एंड दिस वाज फॉर लोन्स फॉर से 5 लाख 10 लाख रुपीस, राइट? और उसके बाद सिक्योरिटी मांगते थे, या उसके बाद फिर सिक्योरिटी थी, राइट? So this entire thing has gone away now. I think now I think industry has also followed this. I think मोटा अभी पूरी इंडस्ट्री भी बैंक स्टेटमेंट लेड अंडरराइटिंग कर रही है. हाँ, और इसी का हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है विद ऑल द AI एंड ML एंड ऑल दैट कैपेबिलिटीज, अभी सिर्फ बैंक्स में कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर से अपनी सेल्फी भेज देगा और हम बता देंगे कितने की लोन मिलेगी. वो होना ही है, टेक्निकली हो सकता है. I'll tell you why. Because पहले इसको बोलने दे फिर मैं बोलूँगा. I'll tell you why. क्योंकि see, now government is pushing the account aggregator framework like anything, right? As of now, account aggregator framework में there are few banks जो कि क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको कस्टमर की सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस मिल जाएगी, राइट? तो अगर आप लोग देख भी रहोगे तो वन ऑफ आवर लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एडवर्टीजमेंट देता है कि 10 सेकेंड्स के अंदर आपको मनी इन अकाउंट मिल जाएगा. वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो कस्टमर का अकाउंट उस बैंक के अंदर है, राइट? तो उस कस्टमर का व्यू है उसे कि क्या ट्रांजेक्शंस है, क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है. शायद किसी और बैंक को या किसी और NBFC को नहीं है. अकाउंट एग्रीगेटर आने पे वो लेंडिंग कार्ड भी कर सकता है, कोई और बैंक भी कर सकता है, वो 10 सेकंड के अंदर लोन, राइट? सो अकाउंट एग्रीगेटर पे एज ऑफ नाउ सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स हैं. इन सम टाइम lot of other things will come on account aggregator. There will be the e-way bills which will come onto the account aggregator platform, right? There will be GST which will come onto the account aggregator platform. Then there will be these udyams and all what I'm talking about. The KYCs etc. will be available there itself, right? Utility आएगा, telecom आएगा. So customer will just have to give the access to his details, right? Obviously with consent
the account aggregator information. जो आज के डेट में OTP से होता है. आज की डेट में एक OTP से होता है, बट आज की डेट में एज आई सेड सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है, वो भी कुछ लिमिटेड बैंक्स के लिए है. आई थिंक दिस एंटायर डेटा विल बी अवेलेबल ऑन अ क्लिक ऑफ बटन. कस्टमर नीड नॉट, the future maybe, customer need not give any documentation. That's it. Wow. They just need to give a consent and they have to accept the terms and conditions. Money will be in their account. Brilliant. सेल्फी से याद आया, 2 साल पहले एक इजरायली कंपनी आई अपने पास. अच्छा. तो वो कहते हैं कि सर हाउ डू यू अंडरराइट. तो वी वर लाइक वी यूज अ प्लेथोरा ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड वी क्रिएट एन एल्गोरिथम एंड इट्स अ 100 फीचर मॉडल एंड दे वर लाइक वेरी इम्प्रेस्ड. एंड देन दे सेड व्हाट इफ आई टेल यू that you give me a photo of a person and I will be able to underwrite. Wow. मैंने कहा अच्छा. तो like any good salesman, what the guy did was he said एक काम करते हैं, let's do an experiment. मैंने कहा अच्छा बताओ. तो कहता है ये 3 लोग हैं, इनकी फोटोज हैं. Okay. क्या आप इनको देख के बता सकते हो कि आप इनमें से किसको लोन दोगे? हाँ. तो मैंने कहा मतलब I have no clue. तो वो कहता है कि उसके बाद उसने मुझे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करके दिखाए. कहता है कि दोनों आई की सिमेट्री, फोरहेड की लेंथ, यहाँ से नोज के एंड से लिप्स के एंड तक का डिस्टेंस, दोनों चीक बोन्स के एंगल, इस सबको मिला के हमने एक सॉलिड एल्गोरिथम बनाया है और इससे हम लोग बता पाएंगे कि आपको किसको लोन देना चाहिए. फिर कहता है तो हमने इस एल्गोरिथम को इन 3 लोगों पे रन किया. तो and that's where the sales pitch gets interesting, right? So he said, आपको क्या लगता है इनमें से किसको लोन देना? The one was a very nicely dressed guy. Sure. The other was this really nice looking old lady. And the third one looked like a goon. तो कहता है आप इनमें से तीनों में से किसको लोन देते? मैंने कहा यार I still wouldn't know because I don't know their data points, right? कहता है मैं आपको बताता हूँ. So what we did was we ran our algorithm and we gave the loan to the worst looking guy in the amongst 3. And you know why? Because his data points where the symmetry of the face and all of that was much better. And this nice looking gentleman turned out to be a crook and this lady is spending time in the pen. Okay. तो मैंने कहा इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ दरवाज़ा दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं ये डेटा पॉइंट यूज़ करके अंडर राइटिंग तो नहीं करूँगा. बट सेल्फी पे लोग कर रहे हैं. सो इजराइल इज हॉटबेड फॉर इनोवेशंस and some of the companies are actually using some of these very interesting ones. I don't know whether they'll finally be scalable or they'll but if you see like adaptable. Have you used DigiYatra? I have. है ना, तो it's phenomenal face recognition. No, right? but you're not giving credit. No, of course not, but at least मतलब पैसा थोड़ा ना दे रहे हो कि DigiYatra दिखाओ पैसा ले लो. क्या पता हो भी सकता है. नहीं. Basically ये कि face recognition से आप data तो verify कर रहे हो. Of course, but see, taking a credit decision is very different. Right. To certifying that it is the person who's claiming it to be. Authentication के लिए authentication exactly. You can't use it for underwriting. The same one who is applying the loan. Exactly. But अगर हो सकता है दीपांशु कल को मतलब अंडरराइट करने लगे वैसे देखते हैं. टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना. हाँ. कहेगा आपको तो मैं लोन दे ही दूंगा, आपकी सिमेट्री ठीक है. मेकअप से भी फिक्स हो जाएगा वो तो. हाँ. बट आपको ये कस्टमर लोगों से आता है कभी कि यार हमारे डेटा का क्या हो रहा है? कोई ऐसे आता है लोग स्केप्टिकल हो जाते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? आता है कभी कभी, बट अप्रूव्ड कस्टमर से नहीं आता है. कई बार जिन कस्टमर्स का रिजेक्ट कर देते हैं हम एप्लीकेशन, या जिस कस्टमर्स को हम अप्रूव कर देते हैं और बाद में ड्यू टू अदर कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया कोई और उस कारण से उसका एप्लीकेशन होल्ड पे चला जाता है. तब कस्टमर्स कभी कभी बोलते हैं कि मतलब अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे साथ जो लिया वापस दे दो. राइट. सो दैट इज हाउ दे कम. दे विल से दैट आई डोंट नो मतलब आप क्या करोगे उस डेटा का, बट देन वी एड्रेस द कस्टमर दैट नो योर डेटा इज safe and secure. Correct. There should not be any worry for people because there are enough safeguards in the system. Oh, absolutely. We are AWS certified. Right. Our entire data is in the cloud with AWS. Data at rest, data at motion. मतलब काफी सारे technical terms हैं. But the idea being that once data is within our environment, it's beneath the firewall. Sure. So there is no access from outside unless there is a certified VPN entry into it. And whenever it's in the cloud, it is under AWS security and we are certified there. Correct. So we follow all the laid norms. देसी भाषा में बोलो तो बैंक ग्रेड सिक्योरिटी है. करेक्ट. हाँ मतलब और ऐसा नहीं कि हम कंप्लेसेंट है कि हमने बना लिया भाई सब ठीक है हम सो गए, ऐसा नहीं है. हम विजिलेंट है काफ़ी. जैसे कि अगर मैं इवन इन मार्केटिंग मैं चाहूँ तो ऐसा नहीं कि मैं भाई 1 लाख कस्टमर का डेटा निकाल लूँ और फिर सबको SMS भेज दूँ. ये नहीं हो सकता unless I have followed the proper process.
नहीं. But I thought that was your job. No, it So was you're not. basically saying you're not working. No. Yeah, what is this? अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं. काम भी करो. इस पॉडकास्ट को जैसे जो भी देखेगा YouTube व्यू आते ही उनके ईमेल आ जाएगी कि भैया आपका लोन सैंक्शन हो गया. बट आपका फेस की सिमेट्री ठीक होनी चाहिए. Yes, that is important. नहीं, so I think एक और एंगल है हमारे पूरे प्रोसेस में और वो है कोलेंडिंग. राइट. बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है इट्स ऑब्वियसली इन अ वेरी कोलैबोरेटिव स्पेस. एक तो है जो इंडिया स्टैक की पूरी डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी वाली डेवलपमेंट आई है, जो फिनटेक्स लेके आ रहे हैं और जो बैंक्स और एनबीएफसीज जो एस्टैब्लिश्ड फर्म्स जिन डिपॉजिट टेकिंग वाले लोग जो हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जैसे और कंपनियों के साथ भी जुड़ रहे हैं फॉर दैट मैटर, एंड दैट कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम इज डेवलप्ड. बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन challenges in terms of disbursal of loans. What are those challenges from a very under the hood stuff? अगर मैं देखूं कि भाई गाड़ी अंदर से कैसे चल रही है हमारी, वो वाला क्या सीन है इन द सेंस कि जब कोलेंडर आते हैं, जो हमने बोला कि हम कस्टमर के लिए बड़ी अच्छी डील बना के देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो See, I think दो parts हैं and I'll answer in the same way. See, co-lending is the way forward. राइट. आई थिंक जब आप एक लेंडिंग कंपनी चलाते हो तो आप भी किसी से पैसा लेते हो और आगे डिस्बर्स करते हो, राइट. एंड वो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंपनी में उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग होता है. तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ स्लो ग्रोथ, राइट. एंड इफ यू हैव टू गो अहेड एंड compete with the larger NBFCs, larger banks, the co-lending is the way forward because that is what you also said though कि हर कस्टमर के लिए एक स्वीट डील बना के देनी है. तो कहीं पे हम PSU से पार्टनर कर रहे हैं, कहीं लार्जर बैंक से पार्टनर कर रहे हैं, ऑल दैट. Co-lending is the way forward and that enables us to use the partners plus points and our plus points of reach, underwriting, knowing the customer better. But issues आते हैं क्योंकि co-lending नया है अभी कंट्री के अंदर, राइट. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट co-lenders. राइट. एंड जब आप हर एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वहाँ पर भी कुछ इनिशियल चैलेंजेस आते हैं बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ मैरिज ऑफ टू इंडिविजुअल्स. सो some organization will have their processes, their way of working. We have our processes, our understanding of the data, our understanding of the customers. But once there is definitely some initial friction when the co-lending happens in terms of processes, how the APIs have integrated, what is the customer flow and all that. But once it smoothens out, maybe in 1 or 2 months, initial teething issues, after that it's. But the good news in all of this is that all of these co-lenders are completely okay with our underwriting mechanism. Yes. That is the biggest win in the last They have few years. all appreciated our understanding of the MSME. बट ये भी तो होता है ना कई बार कि अरे यार वो कोलेंडर का API नहीं चल रहा है, उनकी मशीनें बंद है और हम लोग नहीं कर पा रहे. That happens. So see, that's what I said, that there are teething issues. Sure. So it's like a marriage. You are married to 20 different individuals. तो हर एक का एक प्लस है, एक माइनस है. दीपांशु का थोड़ा नहीं, बट आई थिंक द अदर थिंग दैट यू ट्राई टू डू इज कि अपने पास कितने 20 कोलेंडर है, 20 को एक्टिव 20 कोलेंडर है, राइट. तो व्हाट वी आल्सो ट्राई टू डू इज कि अगर कहीं पे इनिशियली जब नया कोलेंडर आता है तो हम लोग उसको स्केल धीरे धीरे करते हैं. पहले महीने में हम लोग उसको हार्डली 1 या 2 करोड़ का डिस्बर्सेस देते हैं जिससे कि जो टीथिंग इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए. एंड वी ट्राई टू इंश्योर द कस्टमर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टीथिंग इशू, राइट. तो उसको फिर मूव कर देते हैं, दूसरे ऑप्शंस रहते हैं, दूसरे कोलेंडर्स रहते हैं. So we try to make sure that in the stage of ramping up a new co-lender, we don't impact the customer experience. So होते हैं problems तो होते हैं obviously, but I think we try to make sure that it's not impacting the end customer experience. Correct. It's more our systems and our processes which get impacted to an extent when the new marriage happens. And we have been very flexible in terms of handling various co-lender issues, which I've seen personally in the sense of all the discussions. Yeah, all our co-lenders have been very supportive. Right. Their teams, visits our offices. Our team members are sitting out of their offices to initially, smoothen out the initial hiccups and all that. Yeah. Plus, I think the other thing that happens is कि अब हमारे systems, processes, compliances, credit, collections, everything has been evaluated by 20 different organizations. Phenomenal validation. Absolutely. इसमें से 4 PSU हैं, इसमें से बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, लार्जर NBFCs हैं, सबकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA+ है. तो all of those things have been validated. It's been stamped कि Lendingkart pieces work well. Yeah. So it's also an inherent validation for what we are creating as a system, right? Sure. So I think that's the other advantage and confidence that it has given us. Ki now we will be able to really ramp up because we have been audited end to end for every single process in the company.
And I think the ultimate beneficiary is the customer, because either you are able to service more customers, Yeah. or you're able to give the right amount in terms of the loan Or the and interest other rate. interest rate, Yeah. basically, right? The better this gets, the better it is for the end customer. Absolutely. Basically, सारा तो निकले हो रहा है. हाँ ultimately. हम तो जरिया हैं. हम तो निमित्त मात्र हैं. अच्छा, लेकिन ये तो होगी एक्सटर्नल बातें Right. कि भाई बाहर के लोग ये सब तुम अपने सपोर्टिव लोग हैं वगैरह. इंटरनली कैसे होता है? कितना कोलैबोरेशन है? कैसे चलता है सब कुछ? ये तो मेरा है, ये तो वन टीम तो मैं बोलूंगा. हाँ, वन टीम तो अभिषेक इज द फ्लैग बियरर ऑफ वन टीम. कुछ कॉल्स में मैंने दीपांशु को सुना हुआ है, इसलिए हाँ. आप बताइए पहले. Dipanshu is the guy whom I have to make sure collaborates. Yeah, I think look, we have obviously taken one team as a value, as one of the values in Lendingkart, but it is essential to have it, right? Yeah. At the end of the day, अगर क्रेडिट रेवेन्यू दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कस्टमर के सैंक्शन में प्रॉब्लम आएगी. सिमिलरली ऑन द डेटा साइंस साइड, राइट, क्योंकि अपना पूरा का पूरा अंडरराइटिंग मॉडल इज डेटा ड्रिवन, राइट. तो ये तीन टीम्स तो अपनी प्री सैंक्शन में ही काम आ जाती हैं. उसके अलावा ऑपरेशन टीम्स हैं जो कि उस पर कस्टमर से बात कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, एक्सेप्टेंस टीम है जो नेगोशिएट कर रही है. तो ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी टाइड टुगेदर. उसके बाद ये सब करके एक लोन बनाते हैं. अगर उस लोन में इन लोगों ने कुछ दिक्कत करी है तो कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाएगा, फिर वो या तो कस्टमर सर्विस को कॉल करेगा या फिर देयर विल बी डेलिंक्वेंसीज व्हिच विल हैपन, तो कलेक्शंस इन्वॉल्व होएगा. एट द एंड ऑफ द डे द वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द कस्टमर, राइट. हम लोग सिर्फ उसके आस-पास हमने मल्टीपल स्पेशल यूनिट्स बना रखे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज हैव टू फंक्शन कीपिंग इन माइंड कि यार एंड में कस्टमर इज द किंग. करेक्ट. तो ऑल ऑफ दीज गाइज हैव टू सीमलेसली वर्क. दिन में कितनी मीटिंग्स होती है तुम जानते हो, ऑफ कोर्स. एंड ऑल ऑफ दीज मीटिंग्स ऑलमोस्ट एवरी यूनिट इज इन्वॉल्वड. भाई ये सब आप कह रहे हो, मेक सेंस, बट अल्टीमेटली फिर सारा टारगेट दीपांशु के सर पे क्यों मर दिया जाता है? Valid point. Please, I am also looking for that. Okay, so I have a different take on that. हाँ. अगर सारा टारगेट दीपांशु के सर पे मरा जाता है तो डांट दिलीप को क्यों पड़ती है? दिलीप को क्यों डांट? नॉट फॉर द Collections? डिसबर्सल टारगेट. See, everybody is सो यू आर एग्रीइंग कि सारा टारगेट इसके नहीं, साथ? everybody has a different target, right? अगर बिजू का क्रेडिट टीम का बेसिकली. क्रेडिट का अप्रूवल रेशियोज खराब हो गए तो उसको डांट पड़ेगी. दीपांशु ने डिसबर्सल नहीं किया तो इसको करेगी. मोटा मोटा ये है कि जहाँ पर एंड रिजल्ट कस्टमर आता है, देयर आर डेफिनेटली पुश एंड पुल्स बिटवीन द डिफरेंट टीम्स, बट वंस इट कम्स टू द एंड डिलीवरी पॉइंट, राइट, कि अब कस्टमर का लोन है, राइट, सो देन डेफिनेटली द टारगेट बिकम्स दैट ये कस्टमर को जल्द से जल्द कैसे प्रोसेस से क्लियर करा के उसके अकाउंट में पैसा जाए. उस टाइम पे बट डांट दीपांशु को क्यों पड़ती है? उसका आंसर ये डांट है, नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ मैं उसको चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. डांट दीपांशु को इसलिए पड़ती है क्योंकि शैतान बच्चे ही पिटते हैं. तो शैतानी के बारे में बताइए, क्या शैतानी करी है? लेटेस्ट कौन सी अच्छी वाली शैतानी, फ्रेश माल कौन सा है आपके पास? फ्रेश माल कब? तो अभी ऐसे सीक्वेंस में 2-3 बार हुआ है हाँ. कि वी वर सिटिंग इन माय रूम एंड हैविंग डिनर इन द होटल. जिसको बाय द वे आजकल हॉस्टल बोला जा रहा है. आप हाँ. किसको? होटल को? बॉयज हॉस्टल बोला बॉयज जा रहा है. हॉस्टल. हाँ. तो हम लोग बॉयज हॉस्टल में खाना वाना खा रहे थे. खाना खा के आई थिंक द रूम सर्विस वाज नॉट अवेलेबल, सो आई काइंड ऑफ पिक्ड अप द ट्रे एंड आई वाज ड्रॉपिंग इट आउटसाइड ऑफ द रूम. Right. And you know, I was asking Dipanshu to hold the door because it was just not fixed, right? My sixth sense was telling me that the moment I bend down to put the tray, he will let go of the door. And you know, as I was picking up the tray and I was putting it on the floor, I could see him coming out of the room and letting the door swing. Both of you are outside. With both of us outside. तो मैं ऐसे ट्रे करके कूदा और मैंने वो दरवाजा रोका. तो उस समय से there are multiple such instances where I have started predicting कि ये कब शैतानी करेगा. तो जैसे अभी कल की ही बात थी, हम लोग रेस्टोरेंट गए, बारिश आ रही थी तो हम लोग बाहर आ रहे थे, तो दीपांशु धीरे चलता है, राइट. तो मैंने इसको बोला कि तू कार पे पहुंच, अनलॉक कर, उसके बाद मैं चलूंगा, वरना मैं भाग के पहुंच जाऊंगा, मैं भीगूंगा नहीं, बट यू विल नॉट रीच द कार, राइट, सो आई विल गेट ड्रेंच्ड एनीवे. तो ये पहुंचा ऐसा धीरे 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 करके, इसने दरवाज़ा अनलॉक किया. जैसे ही मैं भाग के इधर से आया, इसने लॉक कर दिया.
But I knew he would do that, right? Correct. So I stopped. I knew that there is no point in me touching this lock right now Right. because it would be locked. So ये इसके चलते रहते हैं. कुछ तो ये जानबूझ के किया था? नहीं, मानेगा नहीं. बॉस इज ऑलवेज राइट. सही कह रहे हो. एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो हमेशा होता है आपके साथ, आप दोनों के साथ. या आपको शायद होता ही होगा रियलाइज. आप लोग आते हो अहमदाबाद में, मकरबा ऑफिस जो है हमारा, वहाँ के जो कॉन्फ्रेंस रूम में आप बैठते हो, Right. आप बैठते हो, दीपांशु आपके सामने बैठता है. Right. आपके साथ अगर कॉल चल रही है और दीपांशु उस कॉल में ना हो, उसका कुछ पैरेलल चलते रहता है. Right. 2-3 पैरेलल यूनिवर्स में दीपांशु इकट्ठा एग्जिस्ट करता है. Right. कोई भी कॉल कर सकता है उसको. Right. और उसकी एक सर्टन वॉल्यूम है बात करने की, जो कम नहीं होती है. एक Correct. मिनिमम से ही वो प्लस 500 डेसिबल I से शुरू agree. होता है वो. I agree. फिर हम अभिषेक से कॉल करे. सपोज इट हैपेंड विद मी वंस. आई वाज टॉकिंग टू यू. आई वाज इन बैंगलोर, यू वर इन अहमदाबाद. Right. And like, Abhishek, I can't hear you because I can only hear Dipanshu. And you told him, Dipanshu, थोड़ा आवाज कम कर. He was like, हाँ मैं बात कर रहा हूँ. अभी ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि थोड़ा आवाज कम कर. And all that is clearly audible to you. Absolutely, he has no idea. He doesn't care. Yes, Okay, और फिर बात करते करते वो धीरे धीरे उठेगा. आराम से सारा चल रहा है जोर से. अगले वो क्या ऐसा मेरे साथ बोर्ड कॉल में हुआ था एक बार. मैंने बोर्ड कॉल में चुप रहे, क्या कर रहा है. Very interesting. Anything from your side? Nothing as such. याद नहीं आ रहा कि बोलना नहीं चाहता. कुछ है क्या? याद नहीं आ रहा है. और अपनी कोई शैतानी बता दे. मतलब that's what he's asking. मैं तो करता नहीं, तू ही करता है. बाकी शैतानियां बताने वाली नहीं. बोल सकता है, इसमें कुछ नहीं है. एक दीपांशु का कस्टमर ऑब्सेशन वाला भी डेफिनेशन बड़ा मजेदार था. मुझे याद है किस समय पहले की बात है. ऑफ कोर्स सम टाइम बैक. Yeah, it's almost 18 months back. किसी को क्रिटिसाइज करने के दीपांशु, तो बंदा बड़ा कस्टमर ऑब्सेस्ड है, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा रहता है. उसको कस्टमर को अपने पास ही रखता है. कस्टमर 10 बार आएगा फिर भी कुछ नहीं करेगा. Anyway, I think that's good stuff, and there is a lot more fun that we have outside of work, I would say. One question that I've been supplied, and I have to ask you guys, Okay. is that तुम लोग अहमदाबाद में सैटरडे संडे को क्या करते हो? ये सप्लाई हुआ है. कहाँ से हुआ है सप्लाई? Doesn't matter. सैटरडे संडे. पहले ये बताएगा फिर मैं बताऊंगा. क्या करते हो यहाँ पे? सैटरडे संडे, मोस्टली द सैटरडे संडे वी आर हियर. वो लास्ट का सैटरडे संडे होता है. मंथ एंड के लास्ट का सैटरडे संडे होता है. तो मोस्टली वी आर वर्किंग सैटरडे संडे. ऑफिस में होते हैं. हाँ, कभी संडे को जैसे कभी अगर वॉल्यूम नहीं है, फ्लो नहीं है, तो वी मूव आउट अर्ली. कभी एक आध बार हमने मूवी भी देखी है. डिनर करने चले गए कहीं जल्दी, काइंड ऑफ. बट मोस्टली इट्स इन ऑफिस. सेम. मैं तो यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि लोगों को दीपांशु से बचा लूँ. क्योंकि मेरा काम यही है. दीपांशु कहीं रायता फैलाएगा, मैं जाके साफ करूँगा. मेरे लिए वन टीम वही है. Okay. No, but on a ऐसा इनको लगता है. on a more serious note, I think he's right. Look, Saturday Sunday only for the last weekend of the month, right? And वहाँ पे तो इतना काम होता है कि मतलब कोई choice नहीं है. See, you also have to lead from the front, right? Both of us are not sitting out of Ahmedabad, Yeah. right? And when you expect the teams to work on a Saturday and Sunday, and sometimes it does happen, right? Yeah. Then the leaders need to be on the floor. You got to be in the trenches. Absolutely. I mean, look, if somebody else is giving their personal time, the least that you would expect is that your leaders are giving the same amount of time. course. So therefore, we also leave our families, we come here, we work through. No, I've seen that. I mean, obviously it's I mean, the point is that while doing all of this, you're still keeping your sanity. You're still making sure that your teams are well protected in terms of they get what they need. Because team motivation is also very important. Yeah, it is. Right? You know, I think the amount of pride that we feel when we look at the teams now is just phenomenal. Right. I think they've responded very well. We are obviously aiming for excellence. We are aiming for a lot of high numbers. And the teams have been exceptional in their support. Right. So therefore, the least that we can do is therefore be available for them. कि अगर कुछ declutter करना है, कोई problem solve करनी है, कहीं कुछ अटक गया है, they should have immediate support available. Correct. And I think that's what we do. Yeah, I remember. I think before Dipanshu took over the operations bit, 2021 में ना, 22 early.
21 21 लेट आई थिंक। हमारे जो पोस्ट सैंक्शन कन्वर्जन्स थे वो काफी कम थे। आई थिंक तेरे इसके उठाने के बाद आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड। Absolutely. So that obviously is because the team with him has responded to the stuff that he has put in place. Absolutely. All the changes that he brought in, and those were all like हमने पहले क्यों नहीं किया? मेरे को ऐसा लगता था कई बार। रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, करेक्ट। एक सिंपल प्रोडक्ट है जो कि लोन प्रोडक्ट है। वी आर अ सिंगल लोन प्रोडक्ट कंपनी। It's very simple in its offtake, right? Yes. All that you need to do is not get into, a lot of complications with respect to processes, policies, ye wo. And I think that's what he did, right? He said, let me just simplify the whole journey. And that has yielded us big results. No, final numbers to teams ही कर रही है, right? And I keep on saying this to my team also. Yeah. That as a team leader, you are as strong as your team, right? तो अगर टीम सही है, टीम अगर परफॉर्म कर रही है, तो आप परफॉर्म कर रहे हो, right? Correct. Definitely the team responds well. बट तेरी टीम को ऐसा तो नहीं लगता कि फंस गए हैं कि एक चीज बार बार करनी पड़ रही है कि या यू आल्सो सी देम थिंकिंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स कि इसको हम कभी और तरह से भी कर सकते हैं? हाँ, so see we are a very nimble footed company. Right. तो हमारे पास बहुत challenges हैं solve करने के लिए. तो day in day out, yes, there is a portion of work which is day in day out very similar. Right. But yes, definitely lot of challenges come in day to day. तो boring तो नहीं है. Correct. No, and I think Dipanshu keeps ensuring कि वो थोड़ा सा एक नया कुछ भसड़ ऐसे इंसेप्शन कर दे into the whole process, so that लोग कहें अरे कुछ नया चैलेंज आ गया। वो काम वैसे इनका है, but ठीक है। I'll take that blame. No, I think the teams are so close to the customers, and I take a lot of feedback from these teams. Right. Like for example, when we were to shoot our ad films last year, and and it's a very standard practice that you go test the scripts out with customers, which you also did. But we decided that let's also do it with our ops team. Right. Because every day कितने हजारों कॉल्स होते हैं हमारे शायद, राइट? कस्टमर से बात हो रही है, हर बंदा आई थिंक दिन में 100-150 लोगों से बात करता है। 100-150 लोगों से बात कर, इससे बड़ा सैंपल सेट कहाँ मिलेगा आपको? Absolutely. एंड वो आदमी जो ये कर रहा है वो खुद ही एक प्रॉक्सी कस्टमर है मेरे लिए। तो जब मैं उनको साथ में बिठाया, उनको सुनाया कि भाई ये हम बनाने वाले, कैसे लगता है आपको, फनी लग रहा है कि नहीं, क्या लगता है आप, और जो फीडबैक हमें मिलता है विच इज फिनोमिनल, और बहुत तुरंत मिलता है। Because they can relate to it. हाँ, relate to it and they don't have to have any उनको ऐसे ही filter नहीं है ना। हाँ, वो बोल देंगे सीधा, अरे सर क्या बोल रहे हो, इसमें क्या मजा है, not like that. So we actually rejected a script. Okay. Because our अपने लोन स्पेशलिस्ट टीम जो है, उन्होंने बोला था सर इसमें मजा नहीं आ रहा, and that we did with last year. This was the case, and we'll continue to do that. मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी strength है हमारी। हाँ, I mean they are so connected with the customers, it's not funny, yeah. Right. And कहीं ना कहीं पे अपने ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, राइट? The way they behave with the customers, they talk to them. वही लेंडिंग कार्ड है, राइट? हाँ, absolutely, because brand जो ये बनती थोड़ा बहुत दीपांशु ने पर्चे में लिखा हुआ है, तो इसको याद है कि अरे ये वाला मैंने बोला नहीं है, हाथ पे ऐसे लिख के आया। तो ये अभी ऐसे करके देख रहा था। No, is very right, because brand is not just advertising, ना? Absolutely. Every customer interaction is a brand building effort. Absolutely. So we've discussed a lot of things. Success की भी अगर हम बात करें, हमने obviously revenue, profitability ये सब की तो बात करी, but what is your definition of success and how do you see it happening going forward for fintechs? So see, being from a fintech point of view, right? So finance part is where you are solving for the customers' financial needs, right? So success वही है जब कस्टमर कोई लोन लेने के लिए आ रहा है हमारे पास, राइट? कितने ज़्यादा कस्टमर्स को आप लोन दे सकते हो, राइट? आप उस फनल को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो जब हमारे पास कस्टमर लोन लेने आ रहा है, वो नॉट नेसेसरीली बिजनेस लोन लेने आ रहा है, राइट? वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन भी ले सकता है, राइट? या वो कस्टमर की एक नीड हो सकती है कि उसे क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिजनेस क्रेडिट कार्ड, राइट? सो करंटली ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं विच प्रोबेबली वी आर नॉट एबल टू सर्विस देम, राइट? बिकॉज द कस्टमर वांट्स टू टेक सम प्रोडक्ट फ्रॉम अस, probably we are not ready with it, or we want to service the customer and probably customer profile is not that, right? So to bridge that gap, how we can convert the conversion metrics of my entire funnel, right? That is the piece which definitely conversion मतलब 100 लोग आए उसमें से कितने लोगों को हमने लोन दे पाए, वो जो परसेंटेज, so that is from the finance point of view. And the technology piece is that कि मेरे कितने customers ऐसे हैं जो टेक फर्स्ट के थ्रू आ रहे हैं, राइट? प्रोबेबली कितने कस्टमर्स हैं जो डिजिटल जर्नी कर रहे हैं, जो बिना किसी
ह्यूमन के कॉल किए हुए, बिना उसे प्रोडक्ट समझाए हुए मेरी ऐप के थ्रू कितने कस्टमर्स अपनी जर्नी पूरी कर रहे हैं, राइट? कितने कस्टमर्स डिजिटली अपना डेटा दे रहे हैं, कितने कस्टमर्स डिजिटली लोन ले रहे हैं, राइट? सो दीज आर द मैट्रिसेस व्हिच वी फॉलो, एंड आई थिंक ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आरओए आ गया, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितनी ग्रोथ रेट एंड ऑल दैट, बट दीज आर दी दोज वुड बी आउटकम्स एग्जैक्टली. अगर हम ये चेस करें तो वो अपने आप हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो अगर ये 3-4 चीजें जो हैं, ये मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए, दीज आर दी few of the metrics which we chase. Abhishek, what do you think about this? So look, what Dipanshu said makes a lot of sense when we talk about business metrics, right? And how we want to grow as a company. But to my mind, another measure of success that we need to look at is in terms of nation building. About 60% of our customers are first-time customers who have taken a business loan. They're new to basically Right. financing. Yeah. They're new to financing on the business side of it. अपने कस्टमर बाहर जाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, पर्सनल के लिए तो पैसा लेते नहीं है. इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, व्हिच हेल्प्स देम ग्रो एंड व्हिच देन क्रिएट्स अ सप्लाई चेन इम्पैक्ट आल्सो, राइट? ओवर एंड अबव दैट, इमेजिन आवर कस्टमर्स टिपिकली आर अ फैमिली ऑफ 4, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, राइट? When you give a loan and change the life of one, you are in effect changing the life of 3 more people. Right. तो अगर अपन ने 2.5 लाख कस्टमर्स को लोन दिया है, so at least 10 lakh lives we have already changed in this country Directly. of the underserved segment of this country. Wow. Right? And I think that then becomes important from a social angle, right? And when you talk to her, she's very clear that, I am here to change the world. Yes. Right? कल को ये 10 लाख अगर 10 गुना होते हैं, 100 गुना होते हैं, एक इतना सब्सटैंशियल नंबर होता है कि you can say that Lendingkart as a company has impacted this percentage of MSME lives in the country. I think that, to my mind, would be success. Right. And that would be the Uber goal. Yeah. And all of what Dipanshu talked about is really, means to the end. Absolutely. The end is nation building. Phenomenal stuff. Now, this is really well put. And I think if that also gives us that purpose, why do you come to work, basically? Absolutely. And this is what we are ultimately ending up doing. Yeah. It's phenomenal. Thank you so much. And I think this was phenomenal conversation. Anything else? Last points? कुछ prepare करके आया जो बोलना भूल गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा सुपर ऐप पे कुछ बोलने वाला था ये? Super app. हाँ जी. What do you think? Fintech super app. बनाना चाहिए हमने. Fintech super app. I think जो मैंने कहा कि इससे पहले वाले डिस्कशन में, राइट, कि अगर कस्टमर आ रहा है तो उसको सारी नीड्स एक अम्ब्रेला के अंदर मिलनी चाहिए. नथिंग जो हमारे भी एग्जैक्ट इमीडिएट पाइपलाइन में है, बट आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच वी वुड वांट टू डू. कि अगर कस्टमर आ रहा है तो सुपर ऐप क्या है, मतलब जो भी उसकी नीड्स है सारी एक जगह, राइट? चाहे वो सिंगल स्टॉप शॉप, उसको पैसे चाहिए, नहीं सब कुछ चाहिए उसको. इंश्योरेंस है, पैसा है, राइट, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं, राइट? सो इट शुड बी अ सिंगल स्टॉप सोल्यूशन, राइट? सो डेफिनेटली दैट इज द वन ऑफ द मीन्स. जो खुद का स्टार्टअप आइडिया भी हो सकता है उसके, शायद, क्या पता, हो सकता है. सब ऊपर वाले के. No, brilliant. No, thank you so much, guys. This was a really good conversation. I think we covered a lot of topics and lots of good stuff that has come out. Thank you so much for your time. I know you have a lot of work to do, month end and all that. So thanks a lot for sparing the time for this. Thanks, Ram. Pleasure being here. Thanks for inviting us. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you for watching the Lendingkart show. All our episodes are available on our YouTube and Spotify channels. I'm Ram Deshpande, signing off. Take care. Bye-bye.